सो हाउ वाज योर डे? ओके। जनरली हम ना बच्चों से ऐसे ही सवाल पूछते हैं, दिन कैसा था, स्कूल कैसा था, एंड देन वी से दे डोंट शेयर एनीथिंग विद अस. Something similar, this dad of a 8-year-old wrote to me. So Vikas says, "Hi ma'am, मैं शाम को आके जब भी अपने बेटे से पूछता हूँ कि तुम्हारा दिन कैसा था, he just answers me, okay, that's it. And हमारी कॉन्वर्सेशन वही ख़त्म हो जाती है. Please tell me, how can I connect with my son and how do I know कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है?" Well, विकास, ऐसे सोचो आप, ठीक है, जब आप ऑफिस से आते हो और आपकी वाइफ पूछती है दिन कैसा था, व्हाट डू यू से? ओके, अच्छा था, ठीक था, दैट्स इट. यू ऑल्सो जस्ट रिप्लाई इन वन लाइन. नाउ थिंक व्हाई यू ओनली रिप्लाई इन वन लाइन. बिकॉज आप सुबह के गए हुए हो, लाइक सपोज यू लिविंग होम एट 8 o'clock और 9 o'clock एंड यू कम होम एट 6 o'clock. तो वो इतने घंटों में आपने इतना कुछ किया है that when you come back home and your wife says how was the day, you don't know what to tell. तो आप क्या करते हो? आप एक जनरल सा आंसर दे देते हो, ओके. अगर बहुत ही बुरा दिन था देन यू से हाँ ठीक ही था, इतना अच्छा नहीं था, राइट? क्या होता है ना, वो पूरे दिन में हमने इतना कुछ कर लिया होता है दैट वी डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. सेम हैपन विद चिल्ड्रन, एंड स्पेशली जब तक आप घर पहुंचते होंगे तब तक तो बच्चे का स्कूल, ट्यूशन, खेलना सब खत्म हो गया होता है. सो उसने अपना, उसके लिए तो दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. सो ही एक्चुअली डजंट इवन नो कि उस आप कौन सी बात कर रहे हो उसके साथ. ओके, सो डोंट थिंक दैट योर चाइल्ड डजंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद यू. दैट इज नॉट द केस. थिंक इट इन दिस वे कि उसने इतना कुछ कर लिया कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से बात करनी शुरू करूँ मैं डैड के साथ. ओके, सो द बेटर वे ऑफ डीलिंग विद इट विल बी दैट यू ask specific questions to your child. Okay, like आज तुम किसके साथ खेले, या फिर आज तुम्हारी मैथ्स की क्लास थी, या फिर आज तुम्हारी स्पोर्ट्स की क्लास थी. और अगर आपको पहले से ही पता है कि उसके स्कूल में कोई एक्टिविटी होने वाली है या फिर वो किसी में पार्ट लेने वाला है, देन टॉक अबाउट दैट. I would suggest that you don't go straight into school कैसा था and you start by talking generic things. Like if your child likes sports, then start with that. तूने वो मैच देखा? Did you know about this match? उस मैच में ये जीता. Generally boys like some game or the other. Okay. Between a father and a son, the best way to bond is if you bond over a sport. Okay, the best way to bond is if you bond over a sport, because that is something that is sometimes common between children and the father, especially two males. Okay, some children are not interested in sports, that's okay. Then figure out what do your child likes. Space, or does your child like chess, or does your child like animals, or does your child like would like to talk about plants, or I don't know, children like a lot of things these days. So you just figure out 2-3 things that you want to know about it and then bond over that particular topic with your child. ओके, चिल्ड्रन से बातें निकलवाने के लिए ना, बच्चों से बातें निकलवाने के लिए वी हैव टू गेट इनटू देयर वर्ल्ड. वी कैन नॉट बी लाइक कि नहीं तुम मेरी बात सुनो, या फिर मैंने अगर तुम्हें पूछा कि आज दिन कैसा था, देन यू स्टार्ट विद द एंटायर थिंग. सुबह इंग्लिश मैम आई, उन्होंने ऐसे बोला, फिर मैथ्स की टीचर आई, फिर उस लड़के ने मुझे ऐसे बोला, फिर इस लड़की ने मुझे ऐसे बोला. दे डोंट रिमेंबर इट ओनली, very honestly they don't remember. Okay, so don't take it personally. Ask very specific questions to your child. Bond over things that are common between both of you. If there are no things that are common between you guys, then try to make one thing that is common so that only both of you knows. Like between my husband and my son, who is 6 now, they both bond over cricket. They bond so much over cricket that my son says, I don't believe you or trust you when you talk about cricket, because I do not know too much about cricket. So that's okay. That's something that they have in common. They will always have in common. So when you say my child doesn't talk to me, maybe he doesn't talk to you about the day. That is okay. Uski mother hai, uske liye, she can talk about it. But you can bond over a specific sport or a topic with him. And then from there you can talk about friends. You can talk about what's happening in school. You can share a little bit about what's happening in your workplace. No stress related thing, but general thing.
कि you went for a meeting, how your experience was, or if you're traveling, what you're expecting, you know, just general things with children. So I hope this helps. Keep things simple. uh, Stay away from your phone when you're talking to your child. Have one specific time with your son when you're going to spend that time with him. I know if you're working and if you're coming home at 8 9, it is almost time for your child to sleep. If your child likes roughhousing, I always tell all the fathers, you should rough house with your child. Rough housing का क्या मतलब होता है? आपने देखा है मदर्स ना कभी भी ऐसे बच्चों को पलट के उल्टा पुल्टा ऐसे इधर उधर ऐसे नहीं करती ना, फादर करते हैं. Okay, and children love it, especially boys. Okay, so if you're a father, all the fathers listening to this, please बच्चों को उठाओ, उलट पलट कलट उछालो पुछालो, बेड पे आप उनके साथ क्या कहते हैं उसको, पिलो फाइट करो. They love it and boys need it. Okay, so because one way you can connect with your child is just roughhousing. So even if you do not have so much time with him in the evening, just go ahead, do a little bit of roughhousing, talk a little bit about sports or whatever topic he knows or whatever topic he's interested in or whatever he's reading. That's it. And then that is your entryway into his world. He will slowly starts opening up about his friends, what he did, what they didn't do. But which opening hai na, this is the best opening to have. Okay, if you're a mother listening to it, then do send it to the fathers, because the fathers should roughhouse with the boys. They love it and they need it for their mental growth and stimulation as well. ओके, बिकॉज बॉयज में इतनी एनर्जी होती है ना, दे नीड इट. ओके, आप कभी भी मदर्स को नहीं देखोगे कि वो अपने लड़कों को उठाएगी पछलेगी. मैं भी नहीं करती हूँ, मैं एक लिमिट तक करती हूँ, लाइक इन द सेंस ठीक है थोड़ा सा पिलो फाइट खेल लिया, बट आफ्टर 2-3 मिनट्स में भी होता है बस करो यार, इतना नहीं हो रहा मेरे से. ठीक है, सो डू दैट. So if you're here for the first time, then do subscribe, like if you like the video. Most importantly, if you have any questions, let me know. I take one question every day and I come and answer it here. You can put your questions in the comments here. You can DM me on my Instagram, on my Facebook. You can write to me an email. सारी details नीचे मैंने दी हुई है आपको. So go ahead and do that, and I'll see you tomorrow with another question. Okay, so this is Divya, your mom friend, your parenting educator, signing off, and I'll see you tomorrow with another question.